Good morning, student. As you know, I am Harsha Gangavane, conducting the lecture of subject Core Java for BCCA Part 2, SEM 4. So, yesterday's video lecture, I started the unit number 3, which having the 3 parts: packages, threads, and exception handling. So, yesterday I just covered the packages. What is the meaning of package, or what is the packages? Okay, so the collection of similar type of classes, we combine those classes together in one folder and give some name, which having the naming convention of the package. So it is called as packages. Okay, there are two types of packages: system defined package and user defined package. System defined package, also known as Java API packages. Why it is called as Java API? Because these particular packages are included in JDK toolkit. Here we are going to use the JDK toolkit 1.6.0. So the 1.6.0 packages or toolkit containing some packages whose known as application programming interfaces. Okay, the full form of API is application programming interfaces, and this application programming interfaces included some packages like LAN, like IO. Okay, so those are the packages which is provided by the API, and it is alternatively called as system defined package. Okay, so API means what? Application programming interfaces. So this is nothing but the system defined packages which is already stored in JDK toolkit, and we can directly use those packages in our program as per our need. The second topic, it is nothing but the naming convention. Naming convention means the rules and regulations which is provided by the Java for naming the packages or classes. It is just a suggestion, not a restriction. Okay, it is just a suggestion for defining the package name, or for defining the class name, or defining the method name. Java provide the naming convention for first package. So the first letter of package, it should be small. The convention of that, for the package, the first letter or first alphabet of package, it should be small. Okay, so rather than number of packages we included in our package, the first letter of that particular package should be small. Then when we define the class, okay, when we define the class, the first letter should be capital. Okay, here in small case or lower case, here the first letter is uppercase. Okay, is in uppercase when we define the class. So always class name started with capital letter. Okay, so this is a class, this is package 2, and this is package 1. Okay, so this is first package, that means first folder whose name is Java, and LAN is second folder. Okay, this is the first package and this one is another package. So the first letter of both the packages are in lower case. So it is naming convention. Then it is class, and after that we calling the method which is defined in math class, that is sqrt. So the naming convention for the method, the first letter should be in small case or lower case, but another word like get info. So the I means the next word, first letter should be in capital. So this is nothing but a small convention which is provided by the Java for identifying the packages, classes and methods which is provided by that particular classes. Okay, so example,
double x is equals to, double it is a data type, x is a variable name, then equal to, that means we are assigning the value and we are directly calling the method which is defined in math class. So where is the math class? Math class is available in lang package. Where is the lang package? Lang package is available in API, that is nothing but the Java. So here java.lang.math. Okay, this is the proper path of that particular class and we are calling the sqrt method. This is again a variable. That means we are ultimately store the square root of variable a or value of a in x. Okay, this is nothing but the naming convention. I repeat again, this is the package. This is also package because the first letter of that particular package is started from lower case letter. Then math is, it's a class. Why? How should I identify this? Because the first letter of that particular class started from capital letter and next one is a method. How I identify? This parenthesis. Okay. Then next one is a creating packages. Creating packages, it is nothing but the user defined package. This is all about the API or the system defined packages which is provided by the JDK and we just directly used in our program, like import statement, import java.io. We already used it. Okay. Next one is a creating package, that means the user defined package. I already told you the rules or the steps for creating the packages. First you have to define the package with the statement or with the syntax of package. This is the very first statement in your program, like package name. Next one is, this is the example. Next we can define the packages in a inner package like this. Java, this is the one folder and we just define another folder like lang. Likewise we can create the package 1 and this is package 2, or we can say the bank first package name and this is saving account. Okay, or we can say save account. Okay, so likewise we can create the inner packages also. So for that particular for creating the inner package, the syntax is package having first package name dot second package name. Okay, this is the statement or this is the syntax for creating the inner packages. Okay, after that we have to create the class which is started from the public access modifier. Okay, so we have to define the public class and the methods of that particular class. After that we have to create the compile this particular class and create the class file, and we just copy and paste that particular class file into the folder, and we have to, before that we have to create the folder in bin directory. Those are the steps for creating package. Now how we can assess the package? First we have to create, पहले हमें इसे create करना पड़ेगा. create करने के लिए ये steps follow करने पड़ेंगे. जब class file यहाँ आ जाएगी तो हम किसी दूसरे प्रोग्राम में उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. So for that, using that particular package which we are created earlier with the user defined packages, so we have to import that particular class name with its package. So the import is a keyword which is used for assessing the packages. Okay, rather those are the API packages, that means the system defined package, or rather those are the user defined package, that means the created by the user also. So import, it is a keyword which is used for importing, inserting or including all the classes in our class. Okay, so how we can import that? So the syntax is first import keyword, then package name dot package2 if there is another package like this.
Okay, package 2, then class name, and then semicolon. So first, for assessing the package, you have to first write the import statement. Import like p1 dot get info. Here import is a keyword, p1 is a package name, and info is a class name which we defined earlier with this particular rules, and copy and paste that particular class file into in p1. मीन्स इसका एक ऐसा फोल्डर होना चाहिए बिन में जिसका नाम p1 होगा, ठीक है, और ऐसा info नाम का क्लास होना चाहिए, और उस info नाम के क्लास में फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से होनी चाहिए. ओके, उसके बाद उसमें जो क्लास बनेगा info, तो यहाँ पे आएगा अपना क्लास info. ओके, कंपाइल करो, क्लास फाइल क्रिएट करो और वो क्लास फाइल इस फोल्डर में डालो. उसके बाद हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंसर्ट दी फर्स्ट इम्पोर्ट स्टेटमेंट विद द पैकेज नेम एंड क्लास नेम. आफ्टर दैट क्रिएट द क्लास XYZ. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द पब्लिक स्टैटिक void main string args. Okay, in that we have to create the object of that particular info class, I new info, and we have to call any method which is defined in info class. Okay, so compile this particular program, remove the error, and run this program by using Java interpreter. What are the difficulties when we assess that particular package or the particular class which is defined by the user? The difficulty is, first we have to remember the class name as it is. मीन्स जैसा हमने इसका क्लास को डिफाइन किया है उसी तरह से उसका नाम जो है वो हमें याद रखना होगा और वही यहाँ पे लिखना होगा. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट एंड फॉलो द सेम नेम. ओके, जैसे आई कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा, स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा. सो वी हैव टू फॉलो द सेम नेम विच वी डिफाइन अर्लियर फॉर डिफाइनिंग द पैकेजेस. ओके, देन वी हैव टू इम्पोर्ट द सेम पैकेज. सेम रूल हमें इस पैकेज के नाम के लिए भी डालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो पैकेज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे या लिखेंगे वैसा ही फोल्डर यहाँ पे बनेगा और वैसा ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा. ओके, दैट्स वाई दोज फॉलो. इसीलिए ये पब्लिक है. ठीक है, हम कहाँ एसेस कर रहे हैं, हम किसी और क्लास में उसे यूज़ कर रहे हैं. तो यूजबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ अचीव हो रहा है. एंड वी knowing that the object oriented programming provide the features like reusability. So the first reusability concept coming on from inheritance and second one here. So we can apply all the rules and regulation which we learned earlier like interfaces, inheritance, method overloading, constructor overloading and all that. We used all those concepts here. We put all those concepts in this class while defining this class. Okay, हम इसमें सब कुछ यूज़ कर सकते हैं rather than the API also. API हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. उसके according to as per our need we design just create our class here with the public and package statement and use those particular function, method, class in next class. This is nothing but the assessing. So this is first we can say the statement where we use the static importing. Why it is called as static importing? Because here we specifying the name of that particular class which we want to be used. Okay, जो हमें यूज़ करना है उसी क्लास को हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, so this is nothing but the static importing. Here we writing the class name directly. Okay, the next statement, when we want to import all the classes belonging that particular packages, so we have to write this star like io.star हम लिखते हैं. ठीक है, तो io.star में सिर्फ बफर रीडर एक ही क्लास होगा क्या? नहीं.
उसमें नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, बट वी आर स्पेसिफाइंग दी वन क्लास फ्रॉम दी आईओ पैकेज, दैट इज बफर रीडर. सो दैट इज नथिंग बट द स्टैटिक इंपोर्टिंग. ओके, ये स्टैटिक इंपोर्टिंग हो. बट जब हम स्टार लिखेंगे तो हम बफर रीडर भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कोई क्लास आईओ में अगर आईओ पैकेज में अगर होगा तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो इट इंडिकेट we are importing all the packages, all the classes which are belonging the particular package. Okay, अगर एक से ज़्यादा पैकेज का नाम हो तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, import p1 dot p2 dot class name और import p1 dot p2 dot star. Here this mention, this indicate all packages all classes are you are imported in your program. Okay, यहाँ से हम सारे के सारे क्लासेस जितने भी इस पैकेज 2 में हैं वो सारे के सारे पैकेजेस क्लासेस क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो it allows us to use all the classes which are defined in package 2. So accessibility mode क्या हो जाता है, all class के लिए. Okay, this is nothing but the access in the package. So now switch to next topic. Okay, hopefully you understood this particular package topic. Okay, the package topic having the three topic subtopic, that is first is the Java API, which already I told you in my previous video lecture. That is nothing but application programming interface, API. Okay, it is also called as a system defined package. Then naming convention, how we can create the packages and how we can access the packages. Okay. The next one, an important topic, that is nothing but the introduction to thread. What is meant by thread? You heard about the multiprocessor, multi-programming, okay, single programming, multi-programming, yes or no? Yes. So when we want to create the program which perform the multiple tasks at a time, okay, आपने यूनिक्स के बारे में सुना होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिक्स एंड लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़? यस, Linux, Unix are single user operating system. Means एक प्रोग्राम एट ए टाइम, एक ही प्रोग्राम, एक बंदा एक ही प्रोग्राम को क्या कर सकता है, रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. दैट मीन्स द स्क्रीन रन और प्रोसेसर रन ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम. वी कैन नॉट ओपन दी मच मोर एप्लीकेशन एट ए टाइम. वी कैन नॉट रन दी मच मोर एप्लीकेशन एट ए टाइम. एक ही प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करो, रन करो या उसे यूज़ करो. ठीक है. बट व्हाट अबाउट द मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग? इन विंडोज़ यूज़र कैन हैंडल द मल्टीपल टास्क एट ए टाइम. मीन्स वो म्यूज़िक भी प्ले कर सकता है, वो प्रिंट आउट भी निकाल सकता है, वही साइमल्टेनियसली वो वर्ड पे कुछ काम भी कर सकता है, दूसरी फाइल भी ओपन कर सकता है. साइमल्टेनियसली हम इंटरनेट में, मीन्स ब्राउज़र में जाके इंटरनेट में कुछ सर्च भी कर सकते हैं. मीन्स वी आर परफॉर्मिंग दी मल्टीपल टास्क. ओके, सो दैट मल्टीपल टास्किंग कंसेप्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस. मीन्स जब भी हम रियल टाइम एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, सो फॉर दैट पर्पज़, फॉर दैट नीड वी रिक्वायर दी मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग. मीन्स अगर रियल टाइम सिस्टम अगर हमें बनानी है या रियल टाइम एप्लीकेशन हमें बनानी है, सो द वेरी मच यूजेबल कंसेप्ट इज नथिंग बट दी मल्टीटास्किंग. एंड दिस पर्टिकुलर मल्टीटास्किंग कंसेप्ट इज अचीव्ड बाय मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग इन जावा. ठीक है. तो कंसेप्ट क्या हुआ? मल्टी थ्रेडिंग का हुआ. बट बिफोर दैट, when we create the multi-threaded programming, we have to clear what is meant by the thread. Okay, so what is the thread? Thread, it is nothing but the simple program. Thread क्या होगा? एक simple program ही होगा. ठीक है. but उसे कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में बनाया हुआ. मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग दी थ्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर क्रिएटिंग दी थ्रेड.
मीन्स एक सिंपल प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे जो पहले हमने नहीं किए, जो रेगुलर प्रोग्रामिंग में है उसको हम नहीं करेंगे, बट क्रिएट थ्रेड अगर हमें क्रिएट करनी है तो कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? व्हाट इज़ द एडवांटेजेस बाई क्रिएटिंग द थ्रेड? आई ऑलरेडी टोल्ड दैट यू जस्ट क्रिएट द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग बाई यूजिंग दी थ्रेड। ओके, तो एक साथ एक जैसे हम कितने भी प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कर सकते हैं मीन्स हम जो प्रोसेसर है हमारा, जहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस प्रोसेसर को क्या कहेंगे, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करें। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हमें रन करना है, इसे कह रहे हैं प्रोसेसर। सो प्रोसेसर हैव टू रन मल्टीपल प्रोग्रामिंग एट ए टाइम, सो इट प्रोवाइड डेफिनेटली प्रोसेसर का क्या होगा, शेड्यूलिंग होगा। ठीक है, सो दैट टाइम व्हेन प्रोसेसर रनिंग दी मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल एप्लीकेशन एट ए टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसर। ओके, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम, मल्टी प्रोग्रामर, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को रन करना या प्रोग्राम को रन करना, मल्टी प्रोसेसर। सो कंपाइलर, व्हेन वी कंपाइल सम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू थ्रेड priority, according to thread priority we just executing our program। ठीक है, अब thread priority कैसे होगी? So we can set the thread priority by using set priority method, which is provided by the thread class। Okay, thread, it is a class. Again, this class is included in LAN package। Okay, so no need to import that particular package, LAN package, while creating the thread. So how we can create the thread? I explained that particular thing in today's lecture, but the example we do that particular example later. Okay, so first focused on the introduction. What is the thread? Thread, it is nothing but the simple program which is created by the thread class, or we can say by using some rules and regulation for creating the thread. So first, it is a simple class, means जो हमने class अभी create किया, it is also called as a thread। तो उस thread में क्या होगा, उस thread में starting point होगा, that means the beginning, then the middle one, that means the programming, thread programming, and next one the ending। So when we create this simple class, it is also called as a thread, a single thread। So what is the difference between the multi-threading or multi-threaded program? So we have to create one thread, that means the one class here, class A, then class B, class C, and class D. Those are also this is called as multi-threaded programming. But here we are creating the classes, not a thread. So we have to convert this class as a thread. Consider as this class as a thread. How we can create? By using the next step. Okay. So this is the multi-threaded programming. We create the multiple classes in one main, and we are attaching those particular thread with one main module. Okay, so we just creating multiple thread here and attach those particular thread or connect those particular thread in main में हम उसे क्या करेंगे, मॉड्यूल करेंगे, मेन मेथड में उसे मॉड्यूल करेंगे और मॉड्यूल करने के बाद उसे कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसे रन करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या क्या होगा? सो वी हैव टू क्रिएट दी नंबर ऑफ थ्रेड क्लास, सॉरी वी हैव टू क्रिएट दी नंबर ऑफ थ्रेड्स, ओके, विद द rules and regulations for creating the thread, and we have to call all the threads in main module. Okay, so how we can create the thread? There are two types or two methods for creating the thread.
First is implementing runnable interface and second one is extending the thread class. For that means in runnable interface and thread class दोनों में एक run नाम की मेथड है, ठीक है, public void run. We have to override that particular run method. You can understood this very well when we going to execute or when we performing. I just give the example of thread class, okay, or create the thread with the example, okay. So first is implementing runnable interface and second one is a extending thread class. So by using two methods or two way we can create the thread. Before that we have to create the thread like runnable interface with the help of runnable interface और extending the thread class. So जिस भी तरह से या जो भी पर्टिकुलर टाइप हम चूज़ करेंगे उसमें हमें क्या करना होगा, बस एक जो है वो है पब्लिक वॉइड रन. इस मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करना है. सो जो एग्जीक्यूटेबल जितना भी पार्ट रहेगा वो हमें यहाँ लिखना होगा, कहाँ, रन में. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First step while creating the thread, first we have to use the implementing runnable interface और extending the thread class. दोनों में से एक कोई भी चूज़ करना होगा, ठीक है. जब हम क्लास लिखेंगे उसके बाद then we have to override the run method. Whatever we want to be run by that particular thread, we have to write that executable code in run method. After that we have to create the main module, and after that we have to call those particular thread by using start method. So those are the creating rules for the thread. But before that we have to understood how the thread will be executed in our processor. So this is more helpful, or this topic is helpful for understood how the thread will work in the processor. So this is the life cycle of thread. First thread goes on the that particular stage. First stage of the thread is newborn. When we creating or implementing the runnable interface, or extending the thread class, or that means we creating the thread, this is nothing but your first newborn state. After that we have to override this method, after that run method, after that we have to call that particular thread by using the start method. So we are starting here, okay, we just call the start method. When we call the start method, the processor got the information about the thread and it is process on the running that particular thread, ठीक है. बट जब वो रन होती है तो इट इज़ नथिंग बट दी एक्टिव थ्रेड. ये क्या होगा, एक्टिव थ्रेड, ठीक है. बट देयर आर टू stages, or we can say the state. First is running state and second one is a runnable state. So the running state, what is meant by the running state? Running state, that means the particular thread got the processor and execute that particular thread. Means processor को वो thread को processor मिल गया है और वो process हो रहा है. Means वो thread जो है वो execute हो रही है, वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. दैट इज़ नथिंग बट द रनिंग स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेड. दैट मीन्स इट गॉट द प्रोसेसर एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड. ओके. देन रनेबल आर रेडी टू रन. रनेबल थ्रेड्स आर रेडी टू रन बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द प्रोसेसर. उसको क्या, वो क्यू में है, वो एक लाइन में लगे हुए हैं, वो थ्रेड्स एक लाइन में है जो वेट कर रहे हैं किसका, प्रोसेसर का. So those all are runnable threads which are in waiting for the processor. If we are in runnable queue, running queue, the yield method is there which is used. So this is okay for today. We will discuss that particular topic again in my next video lecture. So thank you.